सही है.
जिन्होंने स्वागत किया तेरा नाम रसमुरारी, जिन्होंने स्वागत किया तेरा नाम रसमुरारी, जिन्होंने स्वागत किया। Keep going. तेरा नाम रसमुरारी, जिन्होंने स्वागत किया तेरा नाम रसमुरारी, जिन्होंने स्वागत किया। कमल से प्रीति आई, कमल से प्रीति आई, ब्रह्म में सुन समाए, ब्रह्म में सुन समाए, महासुर से कमल राजी, जिन्होंने स्वागत किया तेरा नाम रसमुरारी, जिन्होंने स्वागत किया तेरा नाम रसमुरारी, जिन्होंने स्वागत किया। सात लोक और अलग अगम, सात लोक और अलग अगम, जगति राधा स्वामी राम, जगति राधा स्वामी राम, दास सोम समायाजी, जिन्होंने स्वागत किया तेरा नाम रसमुरारी, जिन्होंने स्वागत किया तेरा नाम रसमुरारी, जिन्होंने स्वागत
जैसे कल बताए थे कि जो आत्माएं शरीर छोड़ने के बाद सतलोक सचखंड जाती हैं वो लौट के आते नहीं। Like I had said yesterday, the souls that go to Sachkhand Satlok, they do not return into these worlds. तो लोगों को शंका होता है कि फिर सतपुरुष सतलोक से जीवों को माने जीव चताने के लिए सतलोक से कैसे भेजते। Then people may be wondering how does God Almighty send the saints from there to awaken the souls in these worlds? तो कभी भी सतलोक से जो आत्माएं सतलोक पहुंची है उनको नहीं भेजा जाता। ये भंवर गुफा के नीचे महाशून्य के ऊपर एक स्थान है, वहाँ जो ताकत बैठी है उसका नाम योगजीत है। The souls which have gone to Sachkhand Satlok, they are not sent into these worlds. But the souls, there is a place which is above the Mahasun and below the Bhavar Gufa. And the lord of that plane is called Yogjit. तो जब युग का परिवर्तन होता है तो पहले उनको ही भेजा जाता है। वहां से सत्पुरुष का हुक्म होता है योगजीत को कि जाओ जीवों का उद्धार करो। So when the yugas change, then God Almighty sends Yogjit to salvage the souls from. He is instructed by God Almighty. तो वही यहाँ प्रकट होके जिनको सत्पुरुष का अवतार कहा जाता है वही एक समय कबीर बन के आए और वही ताकत एक समय गुरु नानक बन के आई। दोनों दो शरीर में एक बार काम किया तो कहते वही ताकत हमेशा माने फिर उनके परंपरा चालू हो जाती है। जो रूहें साधन करके पार ब्रह्म पहुंच जाती हैं उसके ऊपर जाती हैं उनको ही भेजा जाता है बार बार। So whenever the yugas change, Yogjit is instructed by God Almighty to come into this world. So he always comes, like in the form of Kabir, he had come, and simultaneously he had also come in the form of Guru Nanak Sahib. So he had come in both the forms here, and then the succession of these masters that happens, and other souls become ready. So every time Yogjit comes first when the yuga changes. जैसे सतयुग में उन्हीं का नाम सत स्वीकृत था और फिर करुणामय मुनेन्द्र फिर कबीर ये एक ही ताकत है। वही पहले हर युग के पहले में वो आते हैं। So he was the same in the Satyug. He came as सत स्वीकृत Sat Sukrit, and then he came as Muninder. मुनेन्द्र करुणामय And then Karunamay. So और like, फिर कबीर and then in Kalyug as Kabir. कबीर चारों युग में वो पहले आके चिता के जाते हैं, फिर उनकी रूहों में जो पार ब्रह्म के ऊपर चढ़ाई कर लेती है काल कंपाउंड के पार, उन्हीं को ऊपर से हुक्म होता है और वही रूहें फिर अवतार लेके जीवों को चिताती हैं। उन्हीं को सत्पुरुष का अवतार कहा जाता है। So every time when the yuga changes, he comes, and then the followers, the devotees of his, they, when they cross the path Brahm, they come out of the compound of Kal. Then he instructs them to come into this world to awaken other souls. सत्पुरुष कभी अवतार लेके नहीं आ सकता और अंदर के जो दूसरे मंडल के मालिक भी अवतार लेके नहीं आते हैं। खाली जो महाशून्य के ऊपर और बौर गुफा के नीचे उनका वहाँ पे नाम है योगजीत। वो पहले इनके ही है, वही जो हर समय आते हैं। So Satpurush never comes into this world. He will never incarnate in this world. And like that, even the lords of the different planes, they also never incarnate in this world. So this work is done by Yogjit, who is above the Mahasun and below the Bhavar Gufa.
कहते हैं इसी तरह से जो आत्मा यहाँ गुरु के कृपा से सतलोक पहुंच जाती है वो अमर देश है। एक बार आत्मा वहां जाने के बाद फिर कभी लौट के नहीं आ सकती। So the souls which go from here, when they go into Satlok, Sachkhand, then it is a immortal place, and after that the souls never come back into this world. तो कहते हैं संत भी सतलोक शरीर छोड़ने के बाद सतलोक नहीं जाते हैं। वो ब्रह्म जहाँ से दुनिया चल रही है ब्रह्म में बैठक बनाते हैं और वहां से ही सत्पुरुष के दर्शन में मगन रहते हैं और अपने सिक्कों की संभाल करते रहते हैं। So the masters also, when they ascend and they leave this body and physical world here, they also do not go back to Sachkhand. At the higher planes, they remain in the contemplation of Satpurush, and then they stay in that zone to help the disciples of theirs till all the disciples get free from this compound of Kal. जब तक एक भी सिख ये मृतलोक में रह जाता है तब तक संत ब्रह्म में ही बैठक बना के रहते हैं। वहाँ सब संतों की बैठक होती है, वहीं पे रहते हैं, इसलिए संतों की बड़ी तपस्या होती है। Till each and every soul who is initiated leaves this place and goes back to Sachkhand, they continue to reside in the Brahm. All the saints reside in the Brahm till such time that all their disciples have gone back to Sachkhand. So that is a great sacrifice of all the saints. तो जब उनके पूरे सिख सतलोक सचखंड चले जाते हैं तो वो भी जाके सतलोक में समा जाते हैं, फिर लौट के नहीं आते। So after all their initiates go into Sachkhand, then they also go back. They also go into Sachkhand, and then they don't come into this world. हाँ, तो इसीलिए बहुत लोगों को शंका होती है कि अभी हम साधन करके गुरु की शरण में आके जाते हैं, फिर सत्पुरुष को कोई इच्छा हुआ फिर भेज दे तो फिर हमारी यही हालत रहेगी। So many people have this doubt that if we do our meditation and go to Sachkhand, then perhaps God Almighty will send us back into this world. तो ऐसी बात नहीं है, ये रचना एक ही बार होनी थी, वो भी अनामी पुरुष की मौत से हुई है, एक ही बार होना था, फिर ये रचना नहीं होना है। जो जीव आई हैं वो ऐसे ही, बाकी जो जीव जा रही हैं वो लौट के फिर नहीं आती। So this is only a thing, a phenomenon that has happened only once with the will of Anami. It is his will that this whole creation has happened, and it is only once that such a thing is going to happen. After that, again, this will not happen. तो इसीलिए बाबा जी हमेशा कहते हैं कि सिख के लिए गुरु हमेशा जिंदा है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे महाराज हमें छोड़ के चले गए हैं, वो हमेशा आपके रखवाले हैं, आपके अंदर बैठे। So therefore, Sanji used to always say that we should never think that our masters have died or they have left us and we are alone. They are always there. They are waiting for you within. हमें उन्हीं से प्रेम प्यार बनाए रखना चाहिए जिन्होंने नामदान दिया है। हमारा लेखा जोखा उन्हीं के पास है, हमें उन्हीं का ध्यान करना चाहिए। So we should only contemplate on the masters who have initiated us, because all our account of karmas is with them, and therefore we should always contemplate only on our masters who have initiated us. दूसरे महात्माओं के पास जाने से फायदा है, आपके बहुत सारे कर्म कटेंगे, आपके अंदर तरक्की हो सकती है और कहते हैं गुरु का प्रेम और प्यार बढ़ता है। To go to the other masters is good because that reduces the burden of your karmas by their darshan and prasad. But and also perhaps your meditation improves and your love and affection towards your master improves by going in the company of other saints. तो इसीलिए हमें अपने गुरु से प्रेम प्यार बनाए रखना चाहिए। वो आपके अंदर आपका इंतजार कर रहे हैं, वो हमेशा आपके साथ है। So you should always have love and affection for your masters, and they are waiting for you within, for you to
come and manifest them within you. शरीर अलग अलग होता है, ताकत एक ही होती है, वो सब परमात्मा के समुद्र से आए हुए लहरें होती हैं और जीवों को अपने में लेके फिर उसी समुद्र में जाके समाते हैं। तो हमें चाहिए कि वो ऐसे ही प्रेम प्यार बनाए रखें। They are the same within, they are of the same essence. The bodies may be different, but they are the same stream that comes from the ocean of God Almighty. And after they take the souls back, they also then merge with God Almighty. तो इसीलिए विश्वास रख के प्रेम प्यार से भजन सुमरन से जुड़ा रहना चाहिए। हमें कभी गुरु के प्रति कोई अभाव नहीं लाना चाहिए। Therefore, we should have faith in our masters and lovingly do our devotion. We should never have a doubt in our mind about our masters. तो समय बहुत अच्छा है, वातावरण शांत है, हमें इससे फायदा उठाना चाहिए। हम आंख बंद करके सुमरन और ध्यान से जुड़े। The time is good and let us make the most of it. Let us close our eyes and get connected to Simran and Dhyan.